Hello everyone, hope you guys are doing well. This video is about a chapter. It's called Other Payables and Other Receivables, and I usually do this chapter with my students in grade 9. So what we do is that कुछ questions होते हैं accounting में, and in the IGCSE paper and in the O-level exam we have a question on the expense account and we have a question on an income account, and the students have to adjust it for prepaid and owing. तो उसमें जो है basically you're adjusting the expenses for owings and prepaids and even the incomes for owing and prepaid. So these kind of questions follow a specific format. So that we'll discuss in a bit, but if we start off the topics very easily, what is a prepaid expense? So सबसे पहले prepaid expense is that which you have paid for the next year. So in this period, so एक चीज़ होती है accounting में, उसको कहते हैं accounting period or accounting year or the financial year. So every like the calendar year is different. Students need to know this, that accounting year can start in any month, ठीक है, and it will end after the 12 months. So calendar year we all know it's January to December, ठीक है, लेकिन जो accounting year होता है उसको जो है वो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी महीने में. तो let's say it's starting in on 1st July and then it will end on 30th June of next year. So इस तरह से students need to know कि अच्छा जिस महीने में start हो रहा है उससे एक महीना पहले वाले महीने में वो end होगा. तो let's say अगर अगस्त में start हो रहा है तो जुलाई में end होगा, ठीक है. इसी तरह अगर सितंबर में start हो रहा है तो अगस्त में end होगा, ठीक है. इसी तरह अगर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है तो सितंबर में एंड होगा. इसी तरह अगर नवंबर में स्टार्ट हो रहा है तो अक्टूबर में एंड होगा. सो जिस महीने में स्टार्ट हो रहा है उसके 12 महीने बाद एंड होगा. एंड लेट्स से इट्स स्टार्टिंग इन 2022 सो इट विल एंड इन 2023. इसी तरह इफ इट्स स्टार्टिंग इन 2020 इट विल एंड इन 2021. सो स्टूडेंट्स नीड टू बी क्लियर अबाउट इट. एंड फॉर दिस क्वेश्चन, स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंटिंग ईयर को डिस्कस किया जा रहा है कोई क्वेश्चन में. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, किस ईयर के लिए आप अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, किस ईयर के लिए आपको एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है. ओके, सो मूविंग ऑन, वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस. सो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है, एन एक्सपेंस पेड इन एडवांस इज अ स्मॉल लाइक अ फ्रेज टू डिस्क्राइब अ प्रीपेड एक्सपेंस. व्हाट प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअली इज, सो इन दिस पीरियड, इन दिस अकाउंटिंग पीरियड, आई पे फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. So this accounting period, let's say it's from January 2022 to December 2022, and I pay for 2 months extra of 2023. So let's say the rent for the whole year is 12,000 and I pay 14,000. So if the rent for 2022 is 12,000 and for every month it is $1,000, so and I pay 14,000. So that means I'm paying for January and February 2023. सिमिलरली ओइंग एक्सपेंस क्या होता है, तो अगर कोई एक्सपेंस इनकर हो जाए, कोई जगह आपने लेट्स से कोई रेंट पे आपने जगह ली हुई है और आपने वो जगह पूरे साल के लिए यूज़ कर ली है. सो इफ़ यू यूज्ड इट फॉर द होल ईयर यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंस. हाउएवर इफ़ यू लेट्स से द रेंट फॉर द होल ईयर वाज 12,000 एंड आई पे 8,000, सो दैट मीन्स मैंने 4 महीने का रेंट पे नहीं किया है, सही है, लेकिन मैंने यूज़अप किया है. ओके, सो अकाउंटिंग में ये जो चीज़ है कि आपने यूज़अप किया है बट आपने 4 महीने का रेंट पे नहीं किया. सो ऑन 31st December 2022 I will have this liability of owing expense because I used the place, I used the service, I used the rent, I used that place, but I did not pay for it for the last 4 months of the year. So September, October, November, December, ठीक है, 2022. अच्छा, accounting में there is this very important concept. It's called accruals and matching, और वो concept ये कहता है कि expenses are recorded when the service is used up. सही है. तो let's say मैंने पूरा साल एक जगह इस्तेमाल की and I did not pay $1 for it. So for the whole year I used the place, the rent was 12,000, but I did not pay anything. But still I have to record that 12,000 in my financial statements because I used the place. इसी तरह, because the rule is telling me that expenses are recorded when the service is used up. ठीक है.
Okay, so what is a prepaid expense? What is an owing expense? That is done. What is an accounting year? That is done. Now we move on to the format of the expense account, and this is a very a very famous way to learn the format. Is basically you remember this word POOP. So POOP, how do we apply this word to the expense account? This is prepaid, this is owing. So PO and P. So prepaid brought down, owing carried down, prepaid carried down. ठीक है, ये चार चीज़ें इस अकाउंट के अंदर आती हैं और हर क्वेश्चन में ये चारों नहीं होती. अगर कोई टीचर आपको एक फॉर्मेट देता है तो दैट फॉर्मेट इज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट कैन कम इन द क्वेश्चन, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कैन कम. सो इन एवरी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ओइंग भी हो और प्रीपेड भी हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अच्छा ओइंग है तो प्रीपेड हो, ज़रूरी नहीं है. अगर प्रीपेड है तो ओइंग हो, ये ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि प्रीपेड ब्रॉट डाउन हो और प्रीपेड कैरी डाउन दोनों हो सकता है प्रीपेड ब्रॉट डाउन हो और प्रीपेड कैरी डाउन हो. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने बैंक को यहाँ पे क्यों लिखा है ऑन द डेबिट साइड. So I should know this as a student and as a teacher as well. I am telling you that in accounting there is double entry system. So when one account is being debited, the other account is being credited. So when you are paying for an expense, आप पैसे देंगे ना तो आप अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, इन द कैश बुक यू विल शो द एक्सपेंस दैट यू आर पेइंग on the credit side of the account. So in this account you need to write that on the debit side. ठीक है, also one more thing है, मैंने लिखा है जनरल, यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सपेंस. सो एक्सपेंस से एक्सपेंस का जो मीनिंग है ना वो ये है कि इट्स एनी एक्सपेंस दैट कम्स इन द इनकम स्टेटमेंट इन द एक्सपेंसेस सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. सो जो एक्सपेंसेस सेक्शन होता है लेस अदर एक्सपेंसेस, उसके नीचे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे. ऑल्सो वन मोर थिंग, तो दिस थिंग रिलेट्स टू 1 year, one accounting period. So this will be the start of the accounting period, this will be at the end of the accounting period, this will also be at the start of the accounting period, this will be at the end of the accounting period. This is what you are paying during the year. During the year हम expense के लिए pay कितना कर रहे हैं. Income statement is how much you are transferring to the income statement as an expense. ठीक है, how much do I write as an expense in the income statement. So important thing to note here is that prepaid brought down क्या होता है. तो prepaid brought down is something that is coming from the last year. Okay, last year brought downs always come from the last year. Last year I had paid extra for an expense for basically last year I paid something extra for which was related to this year, not the last year. ठीक है, इसी तरह owing brought down क्या होता है, last year I had not paid some amount which related to last year. ठीक है, तो इसका मतलब है prepaid brought down जो होता है, prepaid expense is always your current asset because see when you pay for an expense ahead, so that means आपने future के लिए अभी से pay कर दिया. जब आप future के लिए अभी से pay कर देंगे तो that means आपने जो है वो future में you will receive the service. So that is why prepaid brought down is coming on the debit side because assets have a brought down on the debit side. ठीक है, for this reason. तो POOP is a very easy way to remember it, but you should also know the reason behind why we are writing prepaid brought down on the debit side. Similarly, owing brought down last year I had not paid some amount of last year. So this becomes my liability when I start my new accounting year, that is 1st January 2022. I have something that I need to pay from the last year. ठीक है, last year मैंने कुछ pay नहीं किया था, वो मुझे pay करना है at the start of the year. Then okay, so wherever the brought down is उसके opposite side पे carry down होता है. तो owing carried down is this year what I did not pay for this year. So basically if this year accounting, if in this accounting year I had to pay 12,000 for rent and I paid 8,000, तो इसका मतलब इस साल के 4 महीने that is सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के 4 महीने का रेंट पे नहीं किया है. ठीक है, सो वो जो है वो लाइबिलिटी बन जाएगी मेरी at 31st December 2022. एंड प्रीपेड कैरी डाउन इज दैट दिस ईयर
आई हैड पेड एक्स्ट्रा फॉर द कमिंग ईयर. सो 2022 को हम कंसिडर करें तो 2023 के लिए जो मैं एक्स्ट्रा पे कर दूँ, दैट इज प्रीपेड कैरिड डाउन. ठीक है. And this is what goes to the income statement basically. ठीक है. So in all the questions you're always supposed to bring this balance down here. So prepaid carried down becomes prepaid brought down, and you write the first day, basically the first day of the next year, so 1st January 2023, and owing carried down becomes owing brought down for the next year. So you write here 1st January 2023 and you write the amount. Okay, and then I told you how the accruals and matching concept is applied to the expense account. So you need to know that whenever you are basically you are not interested in what you are paying. इनकम स्टेटमेंट में आप वो अमाउंट नहीं लिखते हैं जो आपने पे की. इनकम स्टेटमेंट में आप वो अमाउंट लिखते हैं जो आपने इनकर की. जितनी सर्विस आपने यूज़अप की है उतनी इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट जाएगी. ठीक है. बिकॉज इनकम स्टेटमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कैश कॉन्सेप्ट. Income statement is based on accrual concept. So a lot of times I might not pay for an expense in full, but I need to write that as an expense because मैंने उस service को use किया. ठीक है. So this is what the accruals and matching concept is, and this is how it is applied. Okay, so that's about it. In the next video I'll be doing income account.